So we need to start with the assumption. We need to assume or introduce the variable in the equation. Okay. So let me just, all right. So this is the first question. Okay. We will assume something because this is a real life scenario now. So we need to make equation first. So we will introduce the variables and we will make the equation. Okay. So just look at this. When loaded with bricks, our lorry has a mass of 11,600 kg. Can you see the screen and the question, Abrish? Yes, ma'am. Acha. So when loaded with bricks, a lorry has a mass of. Acha, what is a lorry? Ma'am, the big truck. Sorry? The big truck. That's right. Not the big truck, actually, the smaller one, which you might have seen around you. So containing the bricks. So when loaded with bricks, lorry ka mass is 11,600 kg. If the mass of the bricks is 3 times that of empty lorry, so we need to find the mass of the bricks. Okay, right? So we will start with this assumption. Like we need to find out the mass of the bricks. So we will say, okay, let X be the mass of the bricks. Yes, ma'am. Okay. So one time, let me just. All right. So let me just open the whiteboard also. Usually what we will assume the question जो हमने चीज find करनी होती है ना, that we will assume. So we will assume let X be. ये हमने हर question में लिखना है assumption. Let X be mass of bricks. ठीक है, जो चीज हमने अब्रेश निकालनी होती है ना वो हम assume कर लेते हैं. Let X be the mass of the bricks. ठीक है, अब देखें mass of bricks is 3 times the mass of lorry, empty lorry. So what is the mass of the bricks and the empty lorry? What would be mass of lorry in form of x? देखिए आप इस स्टेटमेंट को समझना है अब आपने कि the mass of bricks is 3 times the mass of lorry. So what would be the mass of lorry? X by 3. X by Are you 3. able to understand it or do you want me to explain? देखिए x क्या है? mass of bricks. ठीक है, और जितनी bricks है ना उसके ऊपर उसका mass है total. So they are saying कि जो lorry का mass है ना that is 1/3 of the mass of bricks. जो खाली लॉरी है ना उसका mass कितना है? 3 times less है. Like अगर bricks का mass है ना 9 kg, I'm just assuming 90 kg. So the mass of the lorry is because 1/3, so it is 30 kg. ये बात समझ आ रही है? Empty lorry जो है ना, empty lorry का mass कितना है? 30 kg. और जो loaded lorry है ना, bricks उसके ऊपर आ जाते हैं, वो तब तो दोनों को ऐड करते हैं. Is this clear or not? अगर नहीं clear तो I will explain it again. Abrish, Ma'am, I cannot hear explain you. it again. Is it clear the two things we have written? Yes, ma'am. So let's do this again. देखिए first of all in the word problems whatever you need to find ना जो find करना होता है ना वो that we need to assume. So in this question we need to find out mass of the bricks. So we will assume कि let mass of the bricks be x, right? So आप देखें ये statement देखें. If the mass of the bricks is 3 times the mass of the lorry, so mass of the bricks क्या हमने assume किया x. So mass of the bricks is 3 times. So what would be the mass of empty lorry? एम्प्टी लॉरी का जो मैस है उस एम्प्टी लॉरी से जो ब्रिक्स का मैस है दैट इज 3 times मोर. सो व्हाट वुड बी मैस ऑफ लॉरी? एम्प्टी लॉरी, mass of empty lorry would be the bricks ka mass divided by 3. Are you getting this or not? Yes. ठीक है, now just come back to the first statement. When loaded with bricks a lorry has a mass of this much. Loaded with bricks का मतलब ये क्या है कि you are having that lorry, वो जो lorry है उसका mass, right?
और उसके आगे इस तरह की कोई लॉरी होती है ना, उस लॉरी का mass plus the mass of the bricks. So the mass of the bricks is x and the mass of the lorry is x by 3. अगर आप इन दोनों को ऐड करें ना तो the total weight is 11,600, right? ठीक है. So this is the equation. Total mass is equal to, उन्होंने हमें बताया कि टोटल मास यानी कि लोडेड लॉरी का, जिसमें लॉरी का मास भी आएगा और उस ब्रिक्स का मास भी आएगा, इज इक्वल टू 11,600 kg. अब हमने टोटल लोडेड मास में देखो, द मास ऑफ द लॉरी आएगा विच इज x by 3 प्लस द मास ऑफ द ब्रिक्स आएगा विच इज x 11,600. अब देखो, दिस इज द इक्वेशन वी नीड टू सॉल्व, राइट? सो आर यू क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes. So now we need to solve this. Acha, Abrish, you need to remember one thing. Ki whenever there is a fraction in the equation, right? Whenever there is a fraction in the equation, so multiply the whole equation with the LCM. ताकि आपका fraction खत्म हो जाए. Multiply with LCM. ठीक है? Equations में ये बात याद रखनी. Equations को solve करने का ये trick है. अगर equation में fraction आ जाए, तो multiply the whole equation with LCM. What is the LCM here? देखो, इसका denominator is 3, इसका denominator is 1, here also it is 1. So what is LCM of 3, 1 and 1? LCM is 3 now, because 1 और 1 से कुछ भी नहीं होता. LCM is 3. So multiply the, how many terms are there? 3 terms. So multiply all the 3 terms with 3. ठीक है? Multiply the whole equations with 3. So there are 3 terms in this equation, so we will multiply all the 3 terms with 3. This will be cancelled. So अब equation क्या बनती है? X plus 3x is equal to, multiply this with 3, so 6 3s are 18, 1 3 1s are 3 4, there ये आ जाता है. ठीक है बेटे? Is this Yes, step ma'am. clear? Whenever Yes, there is ma'am. a fraction in the equation, Ma'am, can I so ask how a to get question? rid of that fraction? Multiply the whole equation with LCM. Ma'am, When you can I ask a multiply the whole question? equation with LCM, sorry, Can I ask a question? जी बेटे. Like, ma'am, we add one in the each, so we will multiply. Um, if there would be 2 or 4, so we will multiply with the 3 terms or like that. Not multiply, we are not doing the equivalent fraction. We are multiplying with the LCM, not the both terms. It's not like 3 is multiplied in the denominator also. इन पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 3 और ये 3 in the denominator is cancelled. And that is what we want. ना? We don't want the fraction. We want to cancel the fraction. ठीक है? So it's not like we are Yes, ma'am. making the denominator same. It's like to get rid of this fraction, multiply this whole equation with the LCM. Ma'am, अब जब in the LCM इस term first से multiply होगा, तो 3 will be gone. जब in the LCM इस first term से multiply fraction हुआ, it is 3x. इससे multiply हुआ तो it is 34,800. ये बिल्कुल वही and चीज है that जैसे हम कहते हैं ना, you can do any operation with the equation. तो हमने equation को 3 से multiply कर दिया. ठीक है? and if we cut that, like, look, there is one first fraction cut with the LCM with the denominator, so it is deducted from all the fraction, like with the other two fraction is, this is the denominator is also deducted. The denominator was not there, na? It is 1. So it does not, like, it is still 1 here. The invisible Okay, one. Remember that? We don't write it, but there is a 1 in the denominator. So I've written it okay, so that you are not confused why the LCM is 3. Right? okay, ma'am. So yeah, this is the most useful method. Whenever there is a fraction na, in the equation, so to remove that fraction, always you can do this. Multiply with LCM. Okay? अब देखिए, it's a very simple equation. What is x plus 3x? X plus 3x is 3x square. No. वो तो मल्टीप्लाई होता बात है ना. अगर ऐसा हो ना, x मल्टीप्लाई बाय 3x, तो फिर आपके पास Ma'am, आता है 4x. 3x. 4x, 4x. very good. This is 4x. 4x is equal to 34,800.
Ma'am, right? now you have to write the denominator That's right. अच्छा आप देखें coefficient. अब, नाउ आई वांट टू से दिस टू यू, बिकॉज ये आपको अब याद हो गया ना, बोथ साइड्स राइट, लाइक द कोएफिशिएंट इन द डिनोमिनेटर। लेकिन अब देखो ना, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, अब हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करने। इट्स द सेम थिंग ना, इक्वेशन मैंने आपको बताया ना, इक्वेशन इज लाइक अ बैलेंस, वो जो तराजू होता है उसकी तरह है। इफ यू आर डूइंग एनी ऑपरेशन ऑन द वन साइड, you need to do it on the other side and the balance will remain there. When I multiplied, देखो मैंने असल में तो मुझे सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था। Why? ताकि उसका फ्रैक्शन खत्म हो जाए। But because there is a balance of the equation, so that's why I need to multiply the other two terms also. Are you getting this point? So Ma'am, असूलन तो मुझे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन to keep the balance of the equation, I will multiply all the terms. Same is the case here. उसूलन तो मुझे सिर्फ इसको डिवाइड करना था 4 से, ताकि ये 4 कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन to keep the balance, I need to divide this other side with 4 also. Are you getting this point ma'am, now? ma'am, can I give you the example with the जी, science subject? Like जी बेटे, in yeah. we're learning the chemical reactions, so in that Ah, as well we have to balance the equation, the that's chemical right. equation. That's right. So are you adding the same things to both sides? Yes, ma'am. That's right. So now this 4 is cancelled. So x is equal to, this can be, we can divide it with 4, because अगर आपको याद हो ना, the rule of 4 says कि if the last two digits are divisible by 4, the whole number is divisible by 4. और जो double zero है ना, this is the special, you can say, special case. So I know that this number is divisible by 4, right? So now I can cancel. Now I can divide. I know that mm, 4 into 8 is 32, right? So 2 remainder. So now I will bring this 8 down. 28. So 7, 8 sevens are 28. What will happen with these two zeros? They will directly go to the answer. So what is x? X is 8700. 8700. 8700. 8700, ठीक है। अब देखिए व्हाट वाज x, क्योंकि क्वेश्चन में x तो है ही नहीं, क्वेश्चन में तो लॉरी का मैथ्स है, ब्रिक्स का मैथ्स है। व्हाट वाज x? हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया, x क्या है? व्हाट इज x इन द Ma'am, फर्स्ट लाइन? mass of bricks. दैट्स राइट। सो बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो वी विल आंसर अकॉर्डिंगली। सो mass of bricks is 8700 kg, राइट? यही हमने फाइंड करना। नाउ यू माइट अंडरस्टैंड कि क्यों हमने जो क्वेश्चन होता है उसको अज्यूम करना होता है, क्योंकि जो हमारे वेरिएबल का आंसर होता है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा व्हाट इज द मास ऑफ द ब्रिक, तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट ही वहीं से कर दिया। हमने कहा लेट एक्स बी द मास ऑफ द ब्रिक्स, और फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाली ताकि हमें मास ऑफ द ब्रिक पता चल जाए। अब देखो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि अगर मास ऑफ ब्रिक्स जो है वो है आपके पास 87,000, ऐसे ही है ना, 8700 सॉरी, तो व्हाट वुड बी मास ऑफ एम्प्टी लॉरी? मास ऑफ एम्प्टी लॉरी क्या होगी? Um, 8700 बाय 3, 8700 by 3. ये Yes. हमने लिखा था ना, x बाय 3। तो एम्प्टी जो लॉरी है उसका मास कितना है, इससे डिवाइड करें तो 3 2 आर 6, 3 9 2900। व्हाट इज द मास ऑफ एम्प्टी लॉरी? इट इज 2900। अब आप इन दोनों को ऐड करें अगर 8700 और 2900 को, so your answer should be 11,600, right? So let's add them. Yes, 0, ma'am. 9 plus 7 is 6, 1 carry, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। So this is verified. Your answer is correct. Mass of the bricks is 3 times that of mass of the empty lorry. तो mass of the empty lorry is 2900 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8700 आता है। Are you getting this, बेटे? Is it clear? Yes. ठीक है। So Ma'am, we can move on to the next question. next is easier, I believe. ये पहले ही थोड़ा tricky था ज़्यादा। Ma'am, I So can now speak. let's I see. have the book. Sorry? Ma'am, I Sorry can बेटे? read it. जी बेटे, please. Ma'am, the question is
The This sum is of four consecutive odd number is 56. Find the greatest of the four number. This अच्छा, is like the previous 11th question. that's right, consecutive का word आ गया, तो we will do the same thing. Remember that. अच्छा, अब हमने देखो सबसे पहले ये देखना है, what do we need to find out? हमने क्या निकालना है? हमने क्या फाइंड करना है? The greatest of all four. तो Yes, हम ma'am. कैसे क्वेश्चन शुरू करेंगे? जो हमने निकालना है ना, we will start with assuming that thing. So हम कहेंगे let x be, जो उन्होंने निकालने को कहा है ना, हमने वही कर दिया, let x be the greatest of four number. Yes, ma'am. ठीक है, कि x उन चार नंबर जो कंसेक्टिव चार ऑड नंबर्स है ना, उनमें सबसे बड़ा जो नंबर है उसको हमने x कह दिया. अब देखो इससे, अगर x सबसे बड़ा नंबर है तो व्हाट विल बी द प्रीवियस ऑड नंबर? अगर लिखो X minus 2. एक्सीलेंट, x minus 2 will be the like the second. इसको इस तरह लिखते हैं x minus 2, फिर उससे पीछे वाला कौन सा होगा? x minus X 4 minus 4. Then X और minus x 6. minus 6 And be X the, minus बस be 6 the. चार नंबर है ना, एक x है, फिर उसके बाद x minus 2, x minus 4 और Yes, x ma'am. Yes. be the other Yes. three numbers. Yes. ठीक हो गया ना? अब देखो, अब हमने assumption खत्म हो गई हमारी. अब हमने देखना है कि उन्होंने हमें क्या कहा है. उन्होंने हमें कहा है द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 56. यानी अगर मैं इन चारों नंबर्स को ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 56. कौन से चार नंबर है? x प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 प्लस x, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है. यू गॉट इट वेरी राइट, एक्सीलेंट. वही उसी तरह का क्वेश्चन है. अच्छा, हाउ मेनी x वैल्यूज वी आर हैविंग? 1 2 3 एंड 4. सो हाउ मेनी x? Ma'am, 4x. 4x. ठीक है, जब ऐड करते हैं ना तो x की पावर चेंज नहीं होती, x x ही रहता है. इट्स लाइक, I'm like 4x is equal 56. हाँ 4x 4x is है, equal नहीं ये भी है ना, -2 -4 -6. सो -6 -4 हाउ मेनी? plus 10. नॉट प्लस, सेम Minus 10. सेम टर्म्स है ना, साइन वही रहेगा, Minus 10. -10. तो -10 -12, -10 -2 कितना हो गया? -12. ठीक है, Yes. so now you can take the 12 on the other side of the equation. It will be, अच्छा now we will do the same thing जैसे मैम ने आपको कराया होगा. और यही मैं आपको बता रही थी कि इस तरह शुरू शुरू में हम इस तरह करते हैं ताकि हमें याद रहे. देखो, we will add 12 on both sides. ऐसा किया होगा ना Yes. उन्होंने. So this is Yes, a ma'am. zero pair. This will be gone. Yes. ठीक है. So 56 plus 12 is 68, right? Yes. ऐसे किया होगा ना. अब देखो, जब when you add 12 on both sides ना, because you are new to the linear equations, तो आपको हम ये बताते हैं ना कि when we are adding 12 on the both sides, so whichever Ma'am, operation we do toward one side of the equation, we do it to the other side. हमने equation की राइट साइड पे 2 ऐड किया तो लेफ्ट साइड पे भी 12 ऐड किया, सॉरी. ठीक है, सो नाउ डिवाइड बोथ साइड्स विद 4. तो x की ma'am, वैल्यू कितनी आती है? can I speak? जी बेटे. Ma'am, I solved one question without this. I solved it like by giving the taking the arrows like that. So, ma'am Hmm. appreciated me. Oh, Like you that's have great. done like. That's great. So actually Ma'am, that my is answer the was method same. when we go on the, My sorry answer बेटे. was same. हाँ, answer is same. It's just an जब आप नया नया when you learn the equations, like when you are new to the equations ना, so then you practice this for some time. Like only in class 6 you do that. When you go in the bigger classes you never do that. आप ये भी कभी नहीं करते, ये जो आप डिनोमिनेटर में 4 लिखते हैं, आप ये भी नहीं करते. आप सिंपली कहते हैं 4 is multiplied with x. तो जब 4 इस साइड पे आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा. Are you getting the point? So Yep. we just take the reverse of the operation. Acha, now this 4 is cancelled. 68 by 4 is what? 4 ones are Um. 4. So 17. Yes. X is 17. 17. So what X, is the biggest number? um. Greatest, sorry. Greatest number is 17. Greatest number is 17. Right? This is the answer. Acha, up now let's recheck. If 17 is the greatest number, what will be the previous number? 15? 15. Then 13. 11. that's right. If we add all of them, so let's see what is the 56 coming or not. 7 or 3, 10, 10 or 6, 16.
1 carry and 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is 56, and that makes sense. So this is the verification. Are you getting this, Pite? Yes, ma'am. Right. Ma'am, I also calculated the answer same. Sorry? Ma'am, why we verify the answer? Just to check. This is the next step, na? Abrish, when you are good in maths, na, like when you score more than 85, 90, 95, so then I ask my students to recheck the answers. Like when you solve a question in maths, you can always, like, more than 90% questions you can recheck. So when we verify, it means that my answer is correct. So sometimes there are small mistakes of calculation, maybe. So verify tells you that your answer is correct or not. समटाइम्स ऐसा होता है ना, आप डिवीजन में गलती कर देते हैं, कहीं पे मिस्टेक कर दिया आपने, आपका आंसर जब वेरीफाई होता है ना, तो इट मींस कि यू आर श्योर योर दैट योर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, वी डू दैट अ लॉट इन द बिगर क्लासेस. वी ऑलवेज ट्राई टू रीचेक द आंसर. वी ट्राई टू, if we not, if in like some questions में ना we can recheck the exact answer, जैसे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, we have verified the answer. कुछ क्वेश्चंस में हम इस तरह देखते हैं कि is the answer sensible, like is the answer making sense to you. So इस तरह की भी हम टेक्निक्स यूज करते हैं. इट्स अ गुड हैबिट टू ऑलवेज रीचेक योर आंसर so that your marks are not deducted. Are you getting this point, Vite? Yes, ma'am. ठीक है, so it's a good habit. Ma'am, So next moving, question is David जी. is 4 years old, then 4 years older than Sarah, and Yasser is 2 years younger than Sarah. If the sum Mhm. of their age is 47, find the respective ages. Find their respective ages, right? So David is 4 years older than Sarah. Yasser is 2 years younger than Sarah. So what is common in the both statements? Ma'am, that they are comparing Like which name is coming in both statement? David is Sarah. 4 years older than Sarah. Yasser is 2 years younger than Sarah. So Ma'am, Sarah. Sarah is the common one between the two. अब देखो, हमेशा हम कहते हैं कि हम आंसर से पता करेंगे, बट यहाँ पर उन्होंने कह दिया फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एजेस. इट मींस वी नीड टू फाइंड आउट द एज ऑफ डेविड, सारा एंड यासिर. तीनों की एज हमें बतानी है ना. सो हम अब तीनों की एज अज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज वी विल बी हैविंग वन इक्वेशन. एक इक्वेशन हो ना, तो उसमें एक ही वेरिएबल, अगर मैं लिख दूंगी ना x प्लस वाई प्लस जी, के लेट x बी द एज ऑफ डेविड, y बी द एज ऑफ सारा एंड z बी द एज ऑफ यासिर, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 47. अब क्या करूं, अब तो सॉल्व ही नहीं कर सकती मैं, तो दिस इज रॉन्ग, राइट? सेम इज द क्वेश्चन, सेम वाज द थिंग हियर. अगर मैं कहती ना मेरे फोर नंबर्स आर x y z एंड k, लेट्स से, तो फिर तुम्हें नहीं सॉल्व कर सकती ना. हाउ डू आई नो क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज फोर? सो दिस इज रॉन्ग. इट मींस कि हमने इन सारे क्वेश्चंस में एक ही वेरिएबल यूज करना है. अब इस क्वेश्चन में आप देखो, सारा इज द कॉमन, you can say child between these two, or common girl between these two. So we will Yes. assume the age of Sarah. We will say Yes. let age of Sarah be, X. age of Sarah be X. x. अब देखो, अब हम इसको देखते हैं. अब इसका बड़ा आसान सा तरीका, ये देखें. डेविड इज 4 years older than, सारा की जगह मैं लिख रही हूँ x. नाउ रीड इट. 4 years older than x. What is 4 years older than x? 4 Like ma'am. what is 4 That is more than bigger. x? He is bigger and So what will be age of David? X plus 4. Very good. X plus 4. I hope you are clear. Now look at this. Yasser is 2 years younger than Sarah. So what will be age of Yasser? X 2 years younger. minus X X minus 2. minus 2. So now we know that the sum of three ages is 47. यहाँ तक clear है ना? Now the sum of, ये हमें उन्होंने बताया, sum of three ages is 47. So we need to add all three. Like x plus 4 plus x minus 2 is equal to 47. हमने क्या किया है, हमने तीनों की एज को ऐड कर दिया है, राइट? दिस मेक सेंस ना. दिस इज एज ऑफ सारा, दिस इज एज ऑफ डेविड, एंड दिस इज एज ऑफ यासिर. So now how many x?
x कितना बना? 3x. 3x. Very good. Now plus 4 minus 2. Plus 4 minus 2. Unlike integers, eh? Yes. So we do subtraction. So that is 4 minus 2 plus 2 2 होता है और the sign of the bigger number comes. plus plus. ठीक है? Is equal to 47. Is it clear? When unlike Yes, integers are ma'am. there ना अब्रेश, so हम क्या करते हैं, numbers को minus करते हैं और sign कौन सा आता है? जो बड़ा number होता है उसका sign आता है. समझ आ रही है बात ना? Yes, ma'am. ठीक है? So now this plus 2 we will take on the other side of the equation. So this will be 47 minus 2. So 3x is equal to 45. Divide both sides with 3. So x will be 45 divided by 3 is 15. अब देखो x is not even in the question. x तो नहीं था ना question में. x तो हमने खुद डाला है. So what is age of Sarah? What is age of Sarah? Ma'am, age of Zara is 15. So we 15. can plus 4 in this. That's right. The What is age of David? क्योंकि उन्होंने 19. कहा तीनों की एज बताएं. 19. 19. And what is age of Yasir? 13. 30. और आप देखो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? How can we Ma'am, by verify? adding these ages. By adding. Excellent. So we can always verify the answers. ठीक है? We can always recheck. So if you add all these 15 plus 19 plus 13 तो आपके पास क्या आता है? Ma'am, 47. 47 आता. Ma'am, I ठीक है, तो that's calculated the it. correct answer. Right? So बेटे, is this question clear? Yes, ma'am. All right. So Ma'am, the moving on next to the question is जी बेटे. if a number is tripled, it gives the same नहीं 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 result नहीं as दोबारा. If a number is tripled. tripled, right? It gives the same Double, result triple, as right? It gives the it same result as when 28 is added to it. Find the number. ठीक है. Like a number So what we need to assume? the triple Find the number. number है. तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे let x be the number. जो Yes. आपने निकालना है ना उसको हमने assume कर लेना. Let x be the number. अच्छा आप देखें. They are saying tripled. What is triple The of a number? digit is multiplied 3 times. That's right. So what will be tripled of number? What will be that? 3 multiplied by x 3x. to 3x. 3x. And the other is Ma'am, when there is 28 is 20. added. 20. Yes. So 3x is equal to x plus 28. ये चीज समझ आई? X plus 20. Yes, ma'am. ये देखें, this is tripled of a number and this is when 28 is added. समझ आ रही है ना? Yes, ma'am. So now we will solve this linear equation. This x is on the wrong side, so you take this x on the left Other side side. of the equation. So 2x is equal to 28. X is equal to, divide both sides with 2, And so x is equal to, what is half of 28? 14. 14. अब देखें, hence या so जो भी आप लिखें, so the number is 14. So the Yes. number is 14. ये आपका 14. आंसर है. अच्छा अब हम इसको वेरीफाई करते हैं. उन्होंने हमें कहा है कि if the number is tripled, so what is triple of a number? 14 multiplied by 3 कितना बनेगा? Yes. 42. And if Yes. 28 is added, अगर उस नंबर में 20 ऐड करें तो भी क्या आता है? 42 आता है. समझ आई? 14 ऐसा Uh, नंबर है कि अगर आप इसको ट्रिपल करें या फिर उसमें 28 ऐड करें तो आपका आंसर क्या आता है? 42 आता है. ठीक है बेटे? yes, ma'am. So अब्रिश, आर दीज क्वेश्चंस इजी या मुश्किल है? Easy. Easy. Very good. All right, so let's look at this question number 5. Ma'am, question number 5 is um
A travel agency is planning a holiday for a group of people. Agency receives quotations from two coaches companions, Maya Express and Greek Holidays. Maya Express charges $15 for each person, while Great Holidays charges uh, $12 per person and separate fee of $84. If the total amount charged by each company is the same, find the number of people going to the holiday. Hmm. So what we will do, what we need to find out, we need to find out the number going on the The number number of of people going on people. the holiday. So we will assume with this, like we will say, let the number, let the people going on the Let holiday, the number of people be X. like let the number of people going on the holiday Yes, be X. X. ठीक है। अब हमारे पास दो कंपनीज हैं, उन्होंने दोनों ने कोटा दिया है और वो दोनों बराबर है, लाइक लेट मी राइट डाउन। so let's see what is the offer by the first company के ने Ma'am, कहा है, net माया is एक्सप्रेस ने कहा charges. है, माया एक्सप्रेस ने कहा है कि वो क्या करेंगे, they will charge $15 from each person. So Yes, how much Maya Express charges? $15. $15 per person. तो क्या मतलब है इसका, Yes, 15 है। अगर एक बंदा जा रहा है तो वी विल पे 15x. Yes, 15, दो लोग जा रहे हैं तो वी विल पे 30। आर यू गेटिंग दिस? 10, if 10 people are going to, then it will be 15 into 10, $150। तो माया एक्सप्रेस ने ये yes, कोटेशन दी है कि जितने लोग जाएंगे तो एवरीबडी नीड्स टू पे $15, राइट? ये क्लियर है ना? yes. So now what are the charges of what is the name of other company? Charges of Great Holiday. उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि if the $12 they will charge per person, but they will charge a separate fee of $84। So they are saying that we will charge $12 for the 12x, plus they will charge an additional of $84। Is this clear or not? Ma'am, it is clear. ठीक है अब्रिश, ये बात समझ आया कि नेक what is the quotation of these two? So now we need to find out the number of people when the both are having the same values. It means the equation is 15x is equal to 12x plus 84। हमने उतने number of people Ma'am, take निकालने हैं this जिसमें, 12x to the other side. that's right। Is this clear how this equation is formed? Because they are asking in Yes, the question now, they're asking in the question, if the total amount charged by each company is the same, the same word का मतलब है कि दोनों के पास आंसर सेम आ रहा है, तो हमने इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिया है। हमने कहा है कि जितना the charges of Maya Express is same as the charges of Great Holiday. Now we will take 12x on the other side. So this is 15x minus 12x is equal to 84. What is 15 minus 12? um, 3. 3x is equal to 3x is 84. equal 84. So x is Um, 84 by X is 84 by 3. 3 twos are 6, Now, 24. So 28. X is 28. So what is the answer of this question? the number of people is equal 28. That's right. So So 28, no, 28 people are going on. people. Ma'am, now verify the answer. अब देखो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। अब देखो हम दोनों तरफ पुट करेंगे, हाउ मच माया एक्सप्रेस इज चार्जिंग, क्योंकि दोनों का सेम आना चाहिए ना। तो वी आर कंपेयरिंग माया एक्सप्रेस विद ग्रेट Uh, हॉलीडे। Great holiday. ठीक है, अब देखो दोनों के चार्जेस सेम होने चाहिए। अब माया एक्सप्रेस ने तो सीधा सीधा कहा है कि 15 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, अगर हम 15 और 28 को मल्टीप्लाई करें ना, तो इसका आंसर आता है 8 5 जा 44, 8 1 जा 8, तो ये 120। ठीक है, ये आपके पास आता है 420, यानी माया एक्सप्रेस को आपने $420 देने हैं। अब यहाँ पर देखें, ग्रेट हॉलीडे कह रही है कि चार्ज ऑफ वन पर्सन इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 28, लेकिन आपने एडिशनल $84 देने हैं। So now let's see, 12 multiplied by 28, Ma'am, 336. 36. 336 plus 84 Yes. कहाँ आ जाता है?
420. So they Yes. both are charging $420 if there are 28 people going. Yes. अगर 28 से ज्यादा जाएंगे तो भी दोनों कंपनीज की कोटेशन डिफरेंट हो जाएंगी, और अगर 28 से कम जाएंगे तो भी दोनों कंपनीज के चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे। 28 नंबर ऑफ पीपल वो वाले, इतने अगर लोग जा रहे हैं तो इट डज नॉट मैटर इफ यू आर गोइंग थ्रू माया एक्सप्रेस या फिर ग्रेट हॉलीडे। ठीक है बेटे? Yes. सो एनी कंफ्यूजन? इज इट क्लियर अब्रिश? Yes, ma'am. Alright. So now let's look at this question number 6. The sum of two numbers, one of which is two-third of the other, is 45. Find the smaller number. हमने smaller number निकालना है, तो what we will assume? जी, what we will assume? Let x be, Amrish, let Yes, x be ma'am. the Ma'am, let x be the smaller number. मैंने आपको yes. बताया ना, जो हमने निकालना होता है ना वो हम assume कर लेते हैं। अब देखें, question number 6 is find the smaller number. So हम उसी को assume कर लेते हैं, let x be the smaller number. अब देखो, sum of two numbers, which one is two-third of the other. What is two-third of the other? Ma'am, two-third. Ma'am, half. Like, Like अगर एक नंबर है ना x, तो उसका दूसरा नंबर होगा 2/3 ऑफ x। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने x को तो स्मॉलर नंबर कह दिया, तो फिर ये 2/3 तो नहीं होगा ना, फिर दूसरा नंबर क्या होगा? यानी ये वाला नंबर छोटा बनेगा ना, 2/3। 2/3 वाला नंबर छोटा होगा ना, तो दिस कैन नॉट बी द स्मॉलर नंबर, लेट x बी द बिगर नंबर। ये चीज समझ आई है या नहीं? yes, ma'am. ये बात समझ आई है? Yes. अगर हम x को स्मॉलर कह देंगे ना तो फिर हमारे इक्वेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो हमने कह दिया लेट x बी द बिगर नंबर, और स्मॉलर नंबर उसका 2/3 होगा। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू मेक द इक्वेशन। Equation is sum of these two numbers. So x plus 2/3, x is equal to, what is the sum of two numbers? 45. बेटे ये बात समझ आई है? हमने कहा Yes, कि ma'am. let x be the bigger number, so then the smaller number is 2/3x. अब हमने क्यों नहीं smaller number assume किया? Because 2/3x जो है ना, this is a smaller number. क्योंकि ये 1, इसका इसका जो coefficient है ना, that is 1. So you know that 1 is bigger than 2/3. ये आपको पता है ना बात? 1 whole जो है, that is Yes, bigger. ma'am. So that's why we said let x be the bigger number, 2/x be the smaller number. Acha. Now how to solve? I told you in the first question, there is a fraction in the equation. How to solve it? How to solve it? Multiply the whole equation with, LCM. अब देखो, there are three terms. This will be multiplied with 3. This will also be multiplied with 3, and this will also be multiplied with 3. ठीक है? अब देखो, उसूलन तो I need to multiply only this term with 3, ताकि इसका ये फ्रैक्शन कैंसिल होकर खत्म हो जाए। But because the equation is like a balance, so I need to multiply the all terms with 3. So now this will be 3x. This 3 is cancelled, so it will be 2x is equal to, what is 45 into 3? 5 3s are 15, 4 3s are 12 and 13. So now what is 3x plus 2x? Hmm? Ambrish, what is 3x plus 2x? Uh, 5x. 5x. So now divide both sides with 5. So x is equal to 5 2s are 10, 7 5s are 30. So x is 27. अभी देखो, was x the bigger number? हमने तो smaller number आंसर देना है. So what is the smaller number? Smaller number is Uh, 2 by Smaller 3x number है ना. is. So we will put the Ma'am, your value screen 2 is by, high.
क्या? Ma'am, your screen is hanged. Oh, is it? Oh, So, ma'am, what you are writing is not all right. I will share the screen like again, it is bete. hanged on one place. Okay. Let me share the screen again. So you need to tell me that this time. Can you see the screen? Yes. All right. So now can you see the whiteboard? Can you see the whiteboard now, Abrish? No, ma'am, just the screen is visible. Not any whiteboard. So is it the black screen? No, now it is visible. Now it is visible. All right. So the smaller number is not x. So x like this 27 is not the answer. So we will say so smaller number is 2 by 3x. So you will put the value of x. So they can 3 nines are 27 and 9 twos are 18. So what is the smaller number? Smaller number is 18. 18. So now let's quickly verify. इनको verify करना is easier ना. So अगर हम verify करें तो उन्होंने हमें कहा था कि x plus 2 by 3x is 45. So let's see. X is like the bigger number, bigger plus smaller number. So we have calculated that the bigger number is 27, smaller is 18. अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास क्या आता है 45 which is the given number. ठीक है बच्चे, is it clear? Yes.